वेलकम टू इम्पार्टिंग क्वालिटी एजुकेशन। आज 7/6/2024 तारीख में आपणकर एसएसबी टीजीटी अंडर रे पीसीएम सीबीजेड और आर्ट्स एग्जाम टी कंडक्ट कराई। तो आज चलतु आम यही वीडियो देखा एसएसबी टीजीटी पीसीएम रो जो पेडागोजी क्वेश्चन गुड़िक आसाला तार क्वेश्चन आंसर टी आम एठारे एनालिसिस करवा। चलतु देखी ना प्रथम क्वेश्चन टी। क्वेश्चन नंबर 1, लर्निंग इज ए मोर और लेस डेज मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। ऑप्शन ए टेम्पररी, ऑप्शन बी परमानेंट, ऑप्शन सी फास्ट, ऑप्शन डी स्लो। यही प्रश्नर सठिक उत्तरटी हम ऑप्शन बी परमानेंट। जदि आप परमानेंट टिक चिन्ह देते परमानेंट आप सर्कल करेंगे तेज आपंकर आंसर टी ठीक हम। क्वेश्चन नंबर 2, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लॉज नेसेसिटेट्स क्रिएशन ऑफ मोटिवेशन इन चिल्ड्रेन बिफोर टेकिंग अप लर्निंग टास्क। ऑप्शन ए लॉ ऑफ रेडीनेस, ऑप्शन बी लॉ ऑफ यूज, ऑप्शन सी लॉ ऑफ डिसयूज, ऑप्शन डी लॉ ऑफ इफेक्ट। यार राइट आंसर टी हम ऑप्शन ए लॉ ऑफ रेडीनेस। क्वेश्चन नंबर 3, द कॉन्सेप्ट जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट occurs in the learning theory of dash। ऑप्शन ए पियाजे, ऑप्शन बी भाइगोस्की, ऑप्शन सी कहलर, ऑप्शन डी थर्नडाइक। यही प्रश्नटीर सठिक उत्तरटी हम ऑप्शन बी भाइगोस्की। Question number 4, which of the following psychologists advocate the idea of congruence between real self and ideal self? Option A Lev Vygotsky, option B Abraham Maslow, option C Jean Piaget, option D Carl Rogers। यार सठिक उत्तरटी हम ऑप्शन डी कार्ल रजर्स। आपण मैंने जदि साइकोलॉजी रिलेटेड लेव भाइगोस्की, जीन पियाजे हो कि कार्ल रजर्स बा अब्राहम मस्लो बा कौन सी साइकोलॉजिस्ट वीडियो देखापी चाहते और सहजरे बुझापी चाहते तेज आपण मैंने आम इम्पार्टिंग क्वालिटी एजुकेशन चैनल को जाई सेठारे थिबा पेडागोजी प्लेलिस्ट को देखिपारे। सेठारे खूब सहज भाव में यही साइकोलॉजिस्ट मानकर थियोरी गुड़िक बुझे दि जाइए। चलते जी क्वेश्चन नंबर 5 को। Which of the following statements is true? Option A, learning and maturation are unrelated. Option B, learning brings about maturation. Option C, maturation creates favorable condition for further learning. Option D, maturation is a result of learning। यार सठिक आंसर टी हम ऑप्शन सी, maturation creates favorable conditions for further learning। क्वेश्चन नंबर 6 को जीवा। The approach to instruction that is the most beneficial and positive for all learners is option A teacher centric, option B learner centric, option C subject centric, option D knowledge centric। यार सठिक उत्तरटी प्राय आशा करें समस्त ठीक करेंगे ऑप्शन बी लर्नर सेंट्रिक। क्वेश्चन नंबर 7, variety in content delivery formats in classroom leads to option A promotion of hard work by learners, option B confusion among learners, option C promotion of uniform learning, ऑप्शन डी बेटर लर्निंग बाय डाइवर्स लर्नर्स। यार सठिक उत्तरटी हम ऑप्शन डी बेटर लर्निंग बाय डाइवर्स लर्नर्स। क्वेश्चन नंबर 8 को जीवा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लर्निंग। ऑप्शन ए क्लियर लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, ऑप्शन बी वेरिड इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजीज, ऑप्शन सी यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन फॉर ऑल स्टूडेंट्स, ऑप्शन डी कंटिन्यूअस असेसमेंट एंड फीडबैक। यार सठिक उत्तरटी हम ऑप्शन सी यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन फॉर ऑल स्टूडेंट। यह हम आपंकर सठिक आंसर। जेहेतु एठारे नॉट कहुई तेणु यह हम तार सठिक आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, what is the role of scaffolding in organizing learning? Option A to simplify complex topics, option B to challenge students with difficult tasks, option C to provide support to students while learning new skills, option D to prevent students from making mistakes। यार सठिक आंसर टी हम ऑप्शन सी टू प्रोवाइड सपोर्ट टू स्टूडेंट्स व्हाइल लर्निंग न्यू स्किल्स। स्काफोल्डिंग आउ जो जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट यह आपणकर लेव भाइगोस्की थियोरी रे रही अछि। क्वेश्चन नंबर 10, इफ ए चाइल्ड लव्स रीडिंग स्टोरी बुक्स ऑफन इट इज ए केस ऑफ डेस मोटिवेशन। ऑप्शन ए इंट्रिंसिक, ऑप्शन बी एक्सट्रिंसिक, ऑप्शन सी बोथ ऑफ दीज, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दी एबव। यार सठिक आंसर टी हम जेहेतु से बुक पढ़ाई भल पाऊँ तेणु सठिक आंसर टी ऑप्शन ए इंट्रिंसिक। क्वेश्चन नंबर 11, which of the following is not a characteristic of self learning? Option A following teacher recommended pace, option B setting a personalized pace, option C having autonomy, option D embracing responsibility। नॉट कहुई तेणु यार सठिक आंसर टी हम ऑप्शन ए following teacher recommended pace। Question number 12, which of the following is not a common group learning activity? Option A group discussion, option B peer teaching, option C individualized instruction,
ऑप्शन डी कोलाबोरेटिव प्रोजेक्ट नॉट कुआଯାଇଛି पुणी सेटा ग्रुप लर्निंग एक्टिविटी नुहे बोली कुआଯାଇଛି तेणु तार सठिक आंसर टी हम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉमन ग्रुप लर्निंग एक्टिविटीज तेणु यार सठिक आंसर टी हम ऑप्शन सी इंडिविजुअलाइज इंस्ट्रक्शन कारण इंडिविजुअलाइज इंस्ट्रक्शन टा ग्रुप लर्निंग एक्टिविटी भितर आसू नाही। क्वेश्चन नंबर 13 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टीएलएम ऑप्शन ए कंप्यूटर ऑप्शन बी टाइमलाइन चार्ट ऑप्शन सी टीचर ऑप्शन डी टेक्स्ट बुक यार सठिक उत्तर हम टीएलएम नुह टाइमलाइन चार्टा टीएलएम हो पार नहीं। क्वेश्चन नंबर 14 हाउ इज इवैल्यूएशन viewed in a constructive perspective ऑप्शन ए एज ए टूल फॉर जजमेंट ऑप्शन बी as a means of ranking students option c as a process of providing feedback and fostering growth option d as a way to reinforce traditional teaching method how is evaluation viewed in a constructive perspective constructive perspective रे कौन हबो ना as a process of providing feedback and fostering growth option c हबो right answer। बर्तमान चलन देखि नबा क्वेश्चन 15 formative evaluation takes place option a at the end of instruction option b during instruction option c before instruction begins option d long after completion of instruction formative assessment बा एफए कौन होता है ना आपनकर स्टडी टाइम रे बिटवीन दी स्टडी टाइम भितर होता है तेणु यार सठिक आंसर हो ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन बा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 16 what is the main goal of assessment is learning option a to assign grades to students option b to support students ongoing learning and development option c to measure students memory option d to create competition among students ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ବି ଟୁ ସପୋର୍ଟ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ongoing learning and development। Question number 17 when observation of activities of a group is made by a member of the same group being observed it is called option a participant observation option b controlled observation option c overt observation option d incidental observation ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟିର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ଏ ପାର୍ଟିସିପେଣ୍ଟ ଅବଜର୍ଭେସନ୍ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଗ୍ରୁପ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ହିଁ ଜଣେ ଅବଜର୍ଭ କରୁଛି ତେଣୁ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ପାର୍ଟିସିପେଣ୍ଟ ଅବଜର୍ଭେସନ୍। Question number 18 the blueprint of a test is prepared at day stage of the test construction option a planning option b preparing option c trying out option d evaluation ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ଏ ପ୍ଲାନିଂ ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟଟି ପ୍ଲାନିଂ ସମୟରେ ହିଁ ରେଡ଼ି କରାଯାଇଥାଏ। Question number 19 which of the following is a difference between teacher made test and standardized test option a preparation of blueprint option b inclusion of objective type test items option c fixation of norms option d provision for negative marking for wrong answer। Question number 19 ର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେବ option b inclusion of objective type test items ତେଣୁ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଆପଣଙ୍କର option b। Question number 20 को जिबा what is the primary purpose of using assignment as an assignment tool option a to evaluate students understanding and application of course material option b to reduce workload of teachers option c to test students memory option d to keep students engaged in study related activities assignment ର prime purpose कौन अछि यार सठिक आंसर होबो option a to evaluate student understanding and application of course material क्वेश्चन रो सठिक उत्तरटी होबो ऑप्शन ए। चलंतु जिबा क्वेश्चन नंबर 21 which of the following is not a consideration in the construction of an achievement test option a weightage assignment to different forms of test items option b objectives of the test option c content of learning option d socio-economic condition of the examinee यार सठिक आंसरटी होबो ऑप्शन डी socio-economic condition of the examinee। Question number 22 what is the purpose of self assessment option a to replace traditional assessment techniques option b to assess the learning achievement of classmate friends option c to enable students to reflect on their own learning process and progress option d to lessen the burden of teachers assessment work। Question number 22 ର right answer ଟି ହେବ option c to enable students to reflect on their own learning and progress। Question number 23 which of the following suggests that the test item should cover a representative sample of the content being assessed option a
reliability, option B validity, option C objectivity, option D usability। এই প্রশ্নর সঠিক আনসারটি হব অপশন বি ভ্যালিডিটি। Question number 24. Which of the following guides construction of test items? Option A ability of the students, option B quality of teaching in a school, option C test items available in the textbook for practice by students, option D objectives of instruction। Question number 24 ର right answer ଟି ହେବ option D objectives of instruction। Question number 25 ଏବଂ এই ପରୀକ୍ଷାର ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି ଅଛି which of the following is true for a particle undergoing uniform circular motion? Option A the magnitude of the centripetal force is independent of the speed of the particle। ସରି ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି ବୋଧେ ଆପଣଙ୍କର ପେଡ଼ାଗୋଜି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନୁହଁ, 24ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଛି। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଏଥିରେ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ ଯେ କେତେଟି ଆପଣଙ୍କର ପେଡ଼ାଗୋଜିର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆନ୍ସର୍ ଠିକ୍ ହେଲା ଏବଂ କେତୋଟି ଉତ୍ତର ଆପଣ ଠିକ୍ ଲେଖିଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଲେଖି ଜଣାନ୍ତୁ। ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଇମ୍ପାର୍ଟିଂ କ୍ୱାଲିଟି ଏଜୁକେସନ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।